कृष्णा तुम्हारे पास आए? कृष्णा नहीं आएगा। जल्दी आओ, जिसको भी करवाना है। देखिए, बहुत बड़ा भाग्य का विषय है कि कृष्णा के हाथ से अगर आपको टीका मिलता है तो पैसे नहीं लगेंगे। ये मत सोचना कि टोकरी में कुछ डालना भी पड़ेगा। जोरदार तालियां। देखो, एक मैम आ रही है। कृष्णा के हाथ से अभी अभी जन्माष्टमी निकल के गई है और गोपाष्टमी आने वाली है। वैसे तो कोई गुण नहीं है मुझमें, मैं अवगुणों का भंडार हूँ, लेकिन हे शिवराज, अगर इस जन्म में भी आपने कृपा नहीं तो न जाने फिर कितने और जन्म मेरे व्यर्थ जाएंगे और मैं आपकी कृपा से वंचित रह जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा प्रथम जन्म नहीं है। न जाने कितने और जन्मों में भटकते भटकते मेरे जन्म बीत गए, लेकिन अब की बार मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आशा है। और उस आशा से भक्त कहता हूँ, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन,
कृष्ण के साथ यहाँ पर आ जाए। We will start our valedictory session very soon. Our chief guest is on the way. So just waiting for the
evening once again to all of you in our third day of international conference, second international conference. So this is the post-lunch, and also we already have finished all our session in our conference, and this is the valedictory session we are going to start. So I would like to extend a warm welcome of our chief guest, Dr. Colonel Vinod Kumar Singh. Sir is a AMC veteran, retired as a senior advisor and HOD I Department, Command Hospital, Lucknow in 2005 after 34 and a half years of military services. Sir is graduated in 1970 from MLN Medical College, Allahabad, participated in 1971 Indo-Pak War and served in Jammu Kashmir and field area up to 1976 as a medical officer. Sir did DOMS and MS from Opthel in 1979 from FAMC Pune. Served as eye specialist in military hospital. Sir has managed ocular injury cases of Kargil conflict brought to the tertiary hospital, command hospital. Sir took part in academic activities and published paper in peer-reviewed journal. And now Sir is enjoying a peaceful retired life. So big round of applause for Sir and very welcome. So now I would also like to extend my warm welcome to our guest of honor of the day, Dr. D.S. Negi. Sir is right now ex-Director General Medical and Health Service UP. Sir was a part of Ram Manohar Lohia Combined Hospital Lucknow and also Dr. Samarpan Mukherjee Hospital Lucknow as a Director and Superintendent-in-Chief and CMS. Sir was previously joined Director Lok Bandhu Hospital Lucknow, also was a Director General Medical and Health from UP. Sir was a Director Administration from the Mayo Institute of Medical Science, Barabanki. Thank you, sir, for taking your time to be with us today. And welcome you, sir. I would also take the opportunity to introduce our next guest of honor, Madam P.T. Kaul. Ma'am is a retired Director and Professor, School of Health Science, IGNOU. Ma'am was a former Professor and Dean Institute University, Gurugram. Ma'am has served as a Professor and Director, IGNOU, New Delhi, was a former Project Director for Community Health Officer Program, developed in collaboration with the HFW, Government of India, and implemented across the country. Ma'am has been worked as a former Professor and Dean Faculty of Nursing Institute, University, Gurugram. Ma'am was also former Supervisor and Lecturer in Nursing Education and Administration at SKIMS, Shoda, Srinagar, Jammu Kashmir. Ma'am has received National Florence Nightingale Award by the President of India in 2017, Award of Appreciation by USC and Tree Planting in the name of Professor P.T. Kaul. Ma'am was got a Life Achievement Award from NSS and also Best Nurse Award from NSS. Ma'am was also awarded with Best Teacher by the NTAI 2022. Ma'am contributed to research at national level by guiding more than 18 PhD scholars who were awarded and facilitating around 35 PhD scholars for completion and award of doctoral degree across the country. Ma'am holds various positions: lecturer, supervisor, assistant supervisor, associate professor and director. We welcome you, ma'am. Next, before we move on, I just request and invite our students to welcome dance. पूरा white.
फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है।
Guest of honor, Dr. D.S. Negi sir. Sir, please kindly come on stage. I request the volunteers, please. I request our chairman, sir, Dr. R.S. Dubey, sir. Sir, please kindly come on stage and have an honorable seat. I would also invite our director, sir, Dr. V.P. Tiwari, sir. Sir, please kindly come on stage. I request PT call ma'am also. Ma'am, please kindly come on a dais. I request Director Sir of Pushpanjali College of Nursing, Mr. Rajesh Gupta sir. And I request Principal of Samarpan, Dr. Deepti Shukla ma'am, please kindly come on a dais. So without any delay, I request all the dignitaries for lighting the traditional lamp lighting. ये साइड हो रही है So that we will start our valedictory session. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request our chairman, sir, Dr. R.S. Dubey, to welcome our honorable chief guest by presenting a floral bouquet. I request our director, sir, Dr. V.P. Tiwari, to welcome our honorable guest of honor, Dr. D.S. Negi, sir. And I request Dr. Deepti Shukla ma'am. Ma'am, kindly welcome to Dr. P.T. Kaul ma'am by presenting a floral bouquet. Thank you, sir, and once again welcome you all, sir. Now I request our director, sir, Dr. V.P. Tiwari, sir. Sir, kindly deliver a welcome address to the gathering.
honorable guests on the and the dignitaries in front of us. पहले तो मैं समर्पण परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सब यहाँ पधारे और आपने इस समारोह को सफल बनाया। Though many things have been said about the chief guest and guest of honor, I would take only 1 or 2 minutes to say that this is the second international conference being organized by the Samarpan Institute here. Last year we organized a hybrid conference that was mainly on the online conference on telemedicine, and this year is in hybrid mode, offline and online mode. The topic very well known about the transforming perspective of nursing research leading to clinical innovations. We all know how much important is the research, and many times we use many words. We use sometimes seminars, symposia, workshop and conference, and we need to differentiate between them. And I must say that this is a conference. It was not a seminar, symposia or workshop, because when we have a varied type of topics and it goes for 3, 4, 5 days, and where we have a different type of experts from varied topics from varied discipline, then it converts into conference. The aim of this conference was mainly to bring the experts from different parts of country, from different parts of world together to exchange their ideas, to have some experts knowledge, discuss and come out with the solution what we are facing in the nursing research. Nursing research definitely helps nurses about knowing the advanced skills and how to have effective and quality care to the patients. There were about 13 to 14 topics in this conference. The important were, few of them were the advanced technology in natural birth nursing, then about the technology, strategy and solutions, about the infant feeding also. There were palliative care, advanced forensic nursing science, how to write a quality research article and paper, how to publish them. There were so many different type of topics. And we were fortunate enough to have a galaxy of eminence. If you see our brochure, you will find at least 47 people from 7 or 8 countries and about 15 to 16 states of our country. And in these 4 days, we have about more than 1,000 delegates who attended this conference and the pre-conference workshop to update their knowledge. And our team, under the leadership of Dr. Dipti Shukla, took whole-hearted effort, untiring effort since so many days, and they organized this conference in a 50 manner. The time was short. Before 1 month, we will have a TNI, SNI, UP state meet our campus itself. And after finishing those things, within a span of I think 15 and 20 days, our SNPS team has done a commendable job. And we need a lot of applause. With these words, I welcome the chief guest of the valedictory session, Honorable Colonel V.K. Singh Sahab, who accepted our invitation at the very last moment. Only yesterday, I was not aware, yesterday I came to know from our chairman, sir, that Colonel V.K. Singh Sahab is coming as chief guest. Sir, we are fortunate enough to have you among us, and we are really, really grateful that you accepted our invitation at a short notice, and you agreed to come over. And for that, I, on behalf of Samarpan Group, on behalf of the organizers, and on behalf of the whole team, I extend my heart welcome to you, sir. We have the guest of honor among us, Dr. Negi sir, who is the retired Director General Medical Services. It has been told, I know sir, when he was in Lohia and chairman Samarpan Group, he was also in Lohia Institute since that time. So Negi sir is like our family member. Whenever we have any function, we just make a call and he never say no. Sir, you have a lot of affection to us. You are our family member. You have accepted our invitation. You came here. We are really, really grateful, sir. We welcome you in this conference.
I think Professor Pitikol doesn't need any introduction. She is a stalwart in nursing. Many things have been said about him, about her. Though I am not from nursing, but once Dr. Shukla prepared this brochure, so I tried to go through the biodata of all my speakers. And I must say that now I know many things about our speakers and chairpersons. It has been said, she is not only from nursing. I have found that she did her BSc from RGS College of Nursing about 40 years ago, in 82. And then after that she did not do the MSc. Then she got a degree in MA in public administration. I think many people might be not knowing. So she is a very versatile personality. And after getting that MA degree in public health, then she did MSc in pediatrics. And finally, I am proud enough to say that she got her PhD from a very reputed university, that is Jamia Millia University, about 20 years back. Madam is a stalwart. She was in the School of Health Sciences in Indira Gandhi Open University as the director, founder and director. She is professor and dean in SGT University. Everybody knows about the SGT. The first national reference evaluation center in India is the SGT. So, madam, we are proud to have you among us. She is a real gem in the nursing field. So, I welcome you on behalf of Samarpan family, on behalf of the organizers. I welcome our chairman, Professor Dr. R.S. Dubey. Without his untiring support, unconditional support, it was not possible to organize this conference. When we told that we want to do, he told whatever you want to do, whatever your college want to do, you do. I have all my support. Whatever you want, just say, I need this, we will provide. But you go ahead. He never interfered, and he supported in each and every possible manner. And this conference becomes successful only because of the support of our chairman, sir. So I welcome him. Yes. And now I think chairperson of this conference, Dr. Dipti Shukla, need not any introduction. Because whatever galaxy of eminence we are having here in this campus, in this hall, it is only because of the effort of Dr. Dipti Shukla. Because we are from not nursing field, she is from the nursing, and she is also an established personality renowned in the OBG, and she has a lot of patents, lot of publications, and she is well known among her peers. So I welcome SINPS and chairperson of the conference on the dais. Then we have our collaborator, CMA Rajesh Gupta. He is a director, Pushpanjali College of Nursing, Agra. When we prepared this, at very last moment, I think I told Gupta Sahab, we are going to do this conference, would you like to join us? He never took a second. He told that, Sahab, whatever you want, whenever you want to do anything, you always take me, I like associate. So I am grateful that he agreed to get associated with this conference, and we have done this wonderful conference in this campus in collaboration with Pushpanjali College of Nursing. I welcome you, Gupta Sahab, in this very session. I have many people in front of me. Now in 3 days I have come to know the name of each and every person present here, but time is short. So I welcome the experts coming from Shimla, coming from West Bengal, coming from the Tamil Nadu, coming from the Punjab, coming from all parts of the country. And we have participants, delegates from different nursing colleges in UP and from other states also. We have a faculty. I have Dr. Verma from Shimla. Many people, madam is sitting here, the Fatima College of Nursing. So I will not PCM. So there are many people sitting here, although it is not possible to take name of each and every person. But on behalf of the organizing committee of this conference, I welcome you all in this very detailed session of this conference, and I hope that with the input of you people, this conference has been a grand success, and the outcome of this conference must be an eye-opener, and it will be very helpful to the government of UP to advance the nursing education in the state
and in the country also. With these words, I once again welcome each and everybody present in this hall. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Now I request Principal Ma'am of Samarpan Group, Dr. Deepti Shukla Ma'am, to present a presentation on this conference report. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. A very warm good evening to respected chief guest of honor both, our chairman sir, director Samarpan, director Puspanjali, speakers from different parts of the country, and the chairperson from different parts of the country and the state, and my dear delegates, all the delegates. So it is very tough to have a conclude all 4 days conference, means 3 days conference including 1 day workshop. This conference is very tough, but I tried my level best to have 4-5 slides within half an hour to just summarize what we studied in last 4 days and how many people joined us. Yes? But it is not visible. Okay. So we started our journey on 7. That was the pre-conference workshop, and I'm proud to say I'm not going to summarize the workshop because validity session is already over for that. So more than 700 delegates for the workshop. This conference is held in the Samarpan Institute of Nursing with the association of Puspanjali College of Nursing. And we planned that 3 days conference will be there. Then my expert says you have to go with one workshop also. Then we decided we have to have a workshop, and it was on the simulation-based nursing practices. And nearby 700 students came and they enjoyed the time with our experts. They learned about the active management of 3rd stage of labor. They learned about the PPICD, ICD, CPR, and newborn resuscitation along with the theory block. So it was a wonderful and successful workshop. Now I am coming back to the conference. It is 3 days conference from 8th to 10th September. Today is 10th. We are having our validity session, and now I will move forwards. So total 580 registration for this conference, though I have a capacity of only 350 people to sit inside this hall. We have online, next we are having online registration. So it is a huge amount, 580 registration, and we have 6 registration. One is from China, Russia, Netherlands, Nepal, Bangladesh, and others from India itself. We are having more than 30 chairperson in this 3 days conference from different parts, and 24 speakers. So I can say the chairperson started from Jammu Kashmir to Kerala. So everyone was gone through with that. And the last Lieutenant Mercy, she was from the Jammu and Kashmir. So it was only left over the Jammu and Kashmir also joined us at the end. So we are having all the chairperson from the top to bottom, and the speaker from different areas. I just took a little bit name from there: UP, MP, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, West Bengal, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Tamil Nadu, Nepal, Haryana, Delhi, Punjab. So these are Nepal I am leaving, and these are rest Nepal. These are the national speakers, and then we have the international speaker from UK, Philippines, UAE, Nepal.
So it was there, and the chairperson from Jammu Kashmir, again West Bengal, UK, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu and Delhi. There are so many people joined us in this conference, and the first day our chief guest Shri D.S. Mishra sir, IS Chief Secretary, he himself inaugurated this conference, and we are proud that we heard his voice, and whatever the thinking is having about the nursing, it was explored. And today I just gone through his Twitter account, everywhere Samarpan, Pushpanjali, so it's really a proud feeling. So day one, so many topics covered. I will take the very important topic in this time, that is effective governance and leadership in higher education institution, is taken by Professor Dr. P.T. Kaul Madam. It was a wonderful presentation we had gone through with. Then we have palliative care, then effective ways of structuring writing, already sir has said. So we have so many good speakers, fantastic sessions we had, and I wish that everyone enjoyed, yes? Then along with that first day we have poster presentation. In that 16 paper and 5 poster presentations were there, and we got winners also. That is already awarded, but one is pending, we'll award afterwards. Phone is ringing. Day 2 we have another advanced crisis interventions, then evidence midwifery practices, advanced forensic nursing, then practice in India and worldwide, innovative challenges, midwifery, this is evidence-based, so many topics on the second day also. That was also a fantastic session whole day, and we enjoyed. I'm seeing that from 9 o'clock up to 6 o'clock everyone is sitting here. Yes? Yes, ma'am. सारे टॉपिक अच्छे थे? Yes, ma'am. सीख के जा रहे हैं? Yes, ma'am. अभी मैं आपको बताऊंगी कितने कॉलेजेस ने मुझे ज्वाइन किया है, तो और भी अच्छा लगेगा कि इतने लोग हमारे वहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं. Then day 3, this is today. We have a panel discussion, challenges and solutions in implementing evidence-based practices in community settings, then foresting and revising an innovative approach to the child health care, current advances, simulation-based nursing and evidence-based midwifery practices. And we do have our online sessions. I got only one picture. So we have two online sessions, yes? Yes. And we have some pictures here for the cultural eve, 1 or 3 pictures I just put it here. I think everyone enjoyed in the dancing? Yes, ma'am. So it was all about this. Just I will like to put some points here. How many colleges join us in the registration? It is 49. So some I am taking. I am starting with the Azamgarh AICC EDS College of Nursing. Thank you so much for coming here. Rajendra College of Nursing, Pushpanjali College of Nursing, Era College of Nursing, Ganesh Sankar Vidyarthi Memorial Medical College Kanpur, Sara College of Nursing, Nirmala Institute of Nursing Hardoi, FI College of Nursing, Government College of Ayodhya, Fatima College of Nursing, Ankleites, BCM College of Nursing, BR Ambedkar Nursing College, St. Mary's College of Nursing, Uttaran Sambhunath Research Institute Prayagraj, Akhil Bharati Vidyapit College of Nursing Prayagraj, SN Institute of Nursing and Nirvan Jaipur. And then Deves from Udaipur, RIMS from Ranchi, IMT from Meerut, Ma Sharda from Prayagraj, Nirmal from MP somewhere, Baba College of Nursing, Model Schools, Rudrapur, Anand Nursing College, Meerut, Sultanpur College of Nursing, MSCDS, that is Bahraich, TMU Moradabad, Koraput College of Nursing, Jeevan Jyoti, Sankar Nursing College, King George Medical College, Raghavendra Hospital somewhere in Kanpur, Rashri Darshat, that is in Ayodhya, Gangashil, MS Institute of Nursing, Lucknow, Savitri Hospitals, Radha Govind, TS Mishra, Mahamaya Rajpit somewhere, Ambedkar Nagar, Hayat, Utkarsh, R.K. Singh Hospitals, that is Chitrakoot, then some from Patiala, Principal Government College of Nursing, Ramanar Loya, CMS, Maheshwari, College of Nursing, Aligarh, CKD, that is Jhunjhunu, Rajasthan, Vedanta, that is Vedanta School of Nursing, where is it? Vedanta School of Nursing somewhere, this is SG in Maharashtra. So there are so many colleges that joined us in this conference. Thank you so much everyone for coming and joining us, making us proud to have more than 49 colleges along with us for this conference. It was wonderful experience with all of you, and I don't have much word to speak. I'm getting emotional actually.
Thank you so much for joining, and I'm saying every year we are having one national workshop, one national conference, one international conference. So these three I completed in this year. I am आप लोग को आगे के लिए I am just welcoming you for again a national workshop, national conference and international conference in 2024. Please do come. Thank you so much for coming. Thank you on behalf of Samarpan Group. Here our chairman is in the picture because he is only one for everything behind this. So thank you so much for coming. Thank you so much. God bless you. Now we start our valedictory, and first almost I will like to introduce पोस्टर प्रेजेंटेशन का एक विनर हमारे पास रह गए थे, प्रज्ञा सिंह. She is here, she can come. And I request our chief guest sir, guest of honor, to come forward for the valedictory along with the chairman sir. Sir. And I request Manisha David to take all the certificates which we are supposed to be given. ये थोड़ा साइड में आइए भैया. हाँ थोड़ा साइड में आइए. उधर उधर लाइन में. Manisha David is here. Where is she? So much, sir. Thank you so much. Please stay back there. There are so many. अभी बस मेरे पास है तो आपसे मुझे नाम शिवांगी कितने होना Please take your seats. आप लाइन अप कर लो फिर हम करेंगे. चलेगा? You carry on. Now I request our chairman sir, Dr. R.S. Dubey sir, sir please share some few words in the gathering. आदरणीय डॉक्टर कर्नल वीके सिंह, डॉक्टर DS नेगी सर, डॉक्टर प्रोफेसर पीटी कौल, डॉक्टर VP तिवारी, श्री राजेश जी, सभागार में उपस्थित सभी ज्ञानी जन, चेयरपर्सन, स्पीकर्स, फैकल्टी मेंबर्स, इस संस्थान के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मुझे आप सबका आभार व्यक्त करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सब ने इन परेशानियों के बावजूद जो पिछले 4 दिन से हम लोग एक साथ एक भावना से, एक विचार से, एक लगन से इस हाल के बाहर साथ में बोलते, बात करते, खाना खाते, परेशानियों को झेलते हुए बिताया है, वो काबिल तारीफ रहा है. उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. जैसा
डॉक्टर दीप शुक्ला ने बताया कि इस 4 दिनों में जो आप लोगों ने ज्ञान प्रदान किया है और ज्ञान अर्जित किया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी योग्यता को बढ़ाएगा और आपके ज्ञान को अर्जन करेगा। प्यारे बच्चों, जितने फैकल्टी मेंबर्स, चेयरपर्सन्स आए हैं, आप जिनका मैंने सुना है, देखा है, इन सब ने ये तभी अचीव किया है जब इन्होंने अपने फुल डेडिकेशन से, पूरी लगन से, पूरी इच्छा से इन्होंने अपने ज्ञान का अर्जन किया है, अपनी ट्रेनिंग की है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को, उनकी पर्सनैलिटी के एस्पिरेशन से, उनसे कुछ सीख करके आप जा रहे हैं और कोशिश कीजिए कि आज दिन उनका है, कल दिन आपका हो। आप में से बहुत से लोग मैं चाहूँगा कि आने वाले 8-10 साल में इस लेवल पे आप आ जाएं कि आप यहाँ बैठें, क्योंकि समय की गति है, ये समय आता रहता है, जाता रहता है, पानी का बहाव है। फादर इज चाइल्ड ऑफ मैन कहा जाता है। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, मैं गलत बोल रहा था। तो जो चीज़ है कि आप आज बच्चे हैं, लेकिन कल आप यहाँ पे आएंगे, बढ़ेंगे, करेंगे। हम अपनी बात को ज़्यादा नहीं खींचते हुए बस इतना ही कहूँगा कि मैं डॉक्टर दीप शुक्ला और उनकी टीम को और अपने डायरेक्टर डॉक्टर तिवारी को जितनी मैं बधाइयाँ दूँ, जितना कि मैं तारीफ करूँ, वो कम है। तो जिस तरह से लगातार एक के बाद ये लोग ने काम किया है, वो सराहनीय है, अतुलनीय है और प्रशंसनीय है। डॉक्टर कर्नल विकी सिंह साहब और डॉक्टर नेगी, हमने जैसे ही कल इनसे कहा कि भाई आप लोग आना है, इन्होंने एक भी क्षण नहीं लिया और विजिटली उन्होंने कहा ठीक है मैं ज़रूर आता हूँ। और आपके बीच में आए, मैं 200 दिन के बारे में भी कहना चाहूँगा। कर्नल वीके सिंह एक बहुत ही रिनाउंड आई सर्जन हैं, प्रोफेसर हैं। ये सौम्यवादी हैं, बोलते नहीं हैं पर काम करते हैं। एक अच्छे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, जितनी की तारीफ करो उतनी कम है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शुरू के दिनों में 1971 वार में, कारगिल युद्ध में, यानी आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे अपनी सेवाओं के साथ ये आर्मी में मौजूद रहे। अब उन्होंने अपनी उन जवानों को अपनी सेवाएं प्रदान की। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर DS नेगी, हमारा इनका बहुत लंबा साथ रहा है। हम लोग 1998 से साथ रहे हैं। और एक कहावत आपने उस सुनी, चोली दामन का साथ, तो हमारा इनका चोली दामन का साथ रहा है कि मैं सर्जन था, ये एनर्जी से he is so expert in his field, he is so expert in his field, I cannot say you। यानी जब भी डिफिकल्ट केसेस मुझे ऑपरेट करना होता था तो मैं इनके पास भेजता था, भाई देखो इसको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास केस जो टिपिकल आया करते थे, नॉर्मली केस नहीं आते थे। और जब इन्होंने क्लियरेंस दे दी, यस सर यू कैन गो अहेड, तो मुझे ज़िंदगी में पलट के नहीं देखना पड़ा या कभी कैजुअलिटी का नहीं सामना करना पड़ा कि हमारे पेशेंट को कुछ हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन या आफ्टर ऑपरेशन। ये इनकी काबिलियत है, ये इनकी ट्रेनिंग है। उसके बाद जब इनको मौका मिला तो उसके बाद आपने सुना ही कि उन्होंने अभी भी आर्मी में रहे हैं। ही हैज़ ऑल्सो इन आर्मी, बताना भूल गया, मेजर के पास 60 सब्जेक्ट में गए थे, वहाँ से आए थे और अपने काम में माहिर हैं।
मैंने आप तारीफ करी थी। उसके बाद फिर समय के अनुसार अपने प्रासंगिक पद पर चले गए। तो हाईएस्ट पद होता है डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज का, उस पद से रिटायर हुई है। लखनऊ की हर कॉलेज में यहाँ हर हॉस्पिटल में, बड़े बड़े अस्पताल जो है उसमें डायरेक्टर रहे हैं ये भी इंसान के नाते बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और एक हर महफिल की जान है। मैं बताऊं आपको, ये सच नाइस सिंगर। जिस महफिल में जाते हैं वहाँ इस्तेमाल बांध देते हैं, ये इनकी खास बात है। वो आप पे डिपेंड करता है बाद में कि क्या इसे करा लेते हैं आप लोग। मैंने परिचय दिया इनको आपको। तो ये महान हस्तियाँ स्टेज बैठी हैं। डॉक्टर पीटी कौल के बारे में आपने सुना ही, हमारे डायरेक्टर ने बहुत कुछ बता दिया इनके बारे में कुछ कहना ही सूर्य को दीपक दिखाना होगा, क्योंकि मैं जितना ज्ञान इन्होंने अर्जित किया, जितना इस फील्ड में काम किया इन्होंने, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए वो भी कम है। तो बच्चों में परिचय आपको इसलिए दिया कि जो लोग सामने बैठे हैं डायस पे, डॉक्टर तिवारी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे अपने हैं, ये कहीं मेरी तारीफ की जा रही है। राजेश जी के बारे में बताई दिया लोगों ने कि एक बात पे हाँ भर देते हैं, अभी ना इनको आता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, ये इनकी खूबी है। डॉक्टर तिवारी के कोई काम फजूल है ही नहीं जो हम कर डालेंगे। तो सब भूतियाँ बैठी सामने डायस पे। और मैं इसलिए इतना बताया आप लोगों को कि जब तक आप अपना टारगेट लेके नहीं चलेंगे बच्चों, इसे हमारा पर्पस बताने का था कि आप लेके नहीं चलेंगे तो इस पद को आप अचीव नहीं करेंगे। ये समय बड़ा थोड़ा होता है। अब बीएससी कर रहे हैं तो 4 साल के में से 2 साल 6-7 साल का होता है, बाद पीएचडी कर लेंगे। तो इस फील्ड में आए हैं तो आप ज़रूर सीखें, नॉलेज गेन करें और क्लिनिकल सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप करें। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि उस पर आप ज़रूर बैठे। कल मैं थोड़ी देर के आया था, प्रोफेसर कात्यायनी मैम कल बात कर रही थी, मैं देख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे वर्ड्स को छीन रही हो, यानी जो मैं बोलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, लोगों से कहता रहता है, एग्जैक्टली वही बोल रही थी। हम कहते देखिए ये बात है, ये चाहिए टू बिकम ए वेरी गुड नर्स इन दिस फील्ड। वही सेम बात आपके चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कही थी कि आपका नर्सिंग से शुरू होता है, माँ से शुरू होता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो हर बातें सब मिला के बातें एक ही हैं, बस ये है कि हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। इन चंद शब्दों के साथ अपनी बात में समाप्त करके आप लोग जाने की भी जल्दी होगी। मैं इतना ही चाहूँगा कि आप लोग जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया है उससे अपने लाइफ में ले आएँ, अपने को आगे बढ़ाएं। पुनः एक बार आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए बात समाप्त करते हैं। जय भारत। Thank you, sir. Now I request Dr. P.T. Kaul ma'am to share some experience to our audience. A very good evening to all of you. Respected Colonel Negi sir, chief guest of the day, sorry, Dr. Colonel Vinod, respected Colonel Vinod, chief guest of the day. I will not speak the names now. I think I have Dr. Colonel Vinod, chief guest of the day, Dr. D.S. Negi, guest of honor, Dr. R.S. Dubey, chairman of the Samarpan group, Dr. Tiwari, director, Dr. Rajesh Gupta, director of Pushpanjali College of Nursing, Dr. Dipti, the principal of Samarpan Group College of Nursing. I must start by congratulating one and all whosoever was involved in this conference and also the workshop which was held ahead of the conference, maybe at the government level, maybe at the mission level, maybe at the institutional level, and maybe at the college level, and with specific reference to Dr. Dipti and her team for organizing such a wonderful conference. Because organizing such events take lot of hard work, take lot of energy,
take lot of time, and also take lot of commitment over and above all the time and hard work. The commitment of nurses is very, very important. So I congratulate them all for this wonderful event. The Henry Wordsworth has said that greater is the beginning, but great is the beginning, but greater is the end. So both the things are great. Great is beginning, but greater is ending. So both are wonderful. Both these events were wonderful in the beginning, as well as we see in the end also. For last 3 days, I also have been here for attending the various sessions, and you had really collected a cream of experts, a cream of intellectuals among nursing and other fields all over the country, rather all over the world, who came together with torrent of information and ideas and shared a wealth of knowledge and advancement with you. But just sharing of wealth of knowledge and advancement with you is not enough. It's not enough. It is how much we all have been put across in your minds, and how much we have been able to enable you to deliver it at your own workplace or at your own institution. That is more important. You all know that with the advancement of information and technology, with the advancement of biomedical equipments, the treatment technology, the globalization, and also the internationalization of nursing and the high demand, the nurses have gone ahead of many roles. She has now changed, the role has been transformed to a greater level. There has been role transformation from a just basic nursing care provider to the multitasking roles, which could be a mentor, in addition to the patient basic care provider. That is her main responsibility. She is performing the role of a mentor, performing the role of the trainer, the teacher, the educator. These are all different connotations. The mentor, the educator, teacher, collaborator, coordinator, researcher, leader, and also the nurse specialist, nurse practitioner, the nurse clinician. And this is happening in India also. Maybe not to a greater extent what we expect of it, but it is happening. So these transformed roles, you have to get adapted to the recent technologies. I think youngsters are they are at advantage, not oldies like us. The youngsters are at advantage. They will just switch on their mobile and then they will find the world information, worth of information. So they don't have to hop here and there to go for the information. So you have whole wealth of information with the evidences in your mobile. So you can use them, and you have, we know that you have the students at many places have really excelled. They are doing much, because you can question your teachers. You have more information than the teachers who in the class. I think teachers in the present era is feeling very anxious when they are going to the class, because they never know what type of questions the students will be asked, because teachers, like the patients and others, they are more informed than all of us. So only thing is that you have to organize whatever you read, whatever you see. You have to do mental mapping of all those things. That is very, very important. The evidence-based nursing we talked about so much about the various areas of evidence-based nursing. It should focus on the person. It should be patient-centric. The evidence-based practice should be patient-centric. Person-centric for the interest of the patient.
You know, it should be person-centric for the patient of nursing. And all of you are doing every day the evidence-based practice. You don't need to learn so much and so much for understanding what evidence-based nursing is. Every day, all of you, from the beginning, from a staff nurse, from the student level up to the higher level, you are doing the evidence-based practice. But only thing you are thinking that it is something, some giant is there. No, it's nothing. If you go back to the Florence Nightingale's era, you know what did she do? The evidence-based practice started from there. And that also, she did not only influence nursing, she also influenced medical sciences. Because when she was moving during the Crimean War, when she was going with the lamp to see the condition of the soldiers, what happened? Many of the patients could die because of the problem of hygiene, because of the problem of infection, because of the problem of the environment. And then, when she started using certain simple interventions, she by her own self started using certain simple interventions with the soldiers of the Crimean War while going during the nights with the lamp. She just focused on nutrition, she focused on hygiene, and she also focused on environment, the air, the safety. And then she observed. It's not only she did that, she did not only implement that, she then observed. Yes, because of these interventions, there was a lot of difference in mortality and morbidity among the soldiers. So that was the evidence-based practice. The infection rates were very less because infection was one of the important hallmark, very important cause of causing death among our soldiers. So now, and it is from there the infection control services have come up, from that concept in medical sciences, from that nursing person. So when you go to the hospital, you are giving medication to the patient, or you are giving oxygen therapy to the patient, or you are giving, checking the vital signs. And if you find two patients are of same diagnosis, they are getting same medicine, they are getting same nursing care, they are getting everything same. But patient A responds to your treatment in a different way than the patient B. So you must realize when you are working alertly in the hospital, you will be realizing that why this patient is behaving differently, why that patient is not behaving that way, why this patient is responding to the treatment differently, why that patient is not. So that why, when it comes to you, when you identify that, otherwise by closing your eyes you will distribute the medicines and injections and everything. But when this why comes to you in your mind, then what happens? You think, you do critical thinking, you analyze. And when you analyze, it becomes a research, it becomes evidence-based research. You analyze, how do I handle that patient so that he becomes, he responds in a way the other patient becomes. He responds in a way the patient, other patient progresses from his disease. So you will use certain interventions at your level, or also discuss with the seniors. Then if you find that something has worked out well, that becomes evidence-based research. That is what is evidence-based research. So you should never think, you should be very confident at all activities of your life, whether it is inside the hospital, inside the college, talking to the people. You have to be communicative. You have to express your concerns. You have to show your confidence, and you have to also learn. It's very, very important that you learn, because till the COVID-19 also, the COVID-19 has really revolutionized nursing. Because till that time, everybody would not give that much of respect to the nursing. But all over the world, the COVID-19 has revolutionized the image of nursing. And it is after, because there are so many success stories where they did certain interventions. They didn't have any orders from anywhere. They could do many things which they did of their own, and there are success stories you must have read also. So that was the evidence-based practice, and then that was acknowledged, and that was also approved by the authorities. And with that result, though there are so many challenges, with the result, all the governments, even Indian government also, how much respect they gave to the nurses, and all the governments across the world have put them in the policy. They have put the nursing funding in the policy. They have started investing more in the nursing.
and they have also started investing in India as well as, and it has been reported in the report after the COVID that the healthcare system does not have any meaning without the nursing care. Without the nursing, the health system does not carry any meaning. And you have an example of our community health officers. Under the Government of India Ayushman Bharat scheme, the community health officers, as a part of community health officers, and in IGNU, I took the initiative to develop that program across the country for Ayurveda practitioners and nurses. And the studies have shown that nurses are doing very well. The other day I was listening to the health minister saying in some of the, I think during the parliament session or somewhere, he was talking that he was going somewhere to the cancer hospital there, and on the way there was the health and wellness center, and where our PSC nursing person who had undergone that community health officer's post, and she was doing very well there. So that means, you know, you can do many things. You have the potential of doing many things. That is very, very important. So when we do something, you will be appreciated. As Dr. Dubey was also telling, that you have to be willing workers to do the things. That is very important. The other thing, for anything, you know, for anything what we do, for anything what we plan, the focus should always be on governance. The focus should be on the governance, which we had talked in the first session. It should be on the leadership, and it should be on the empowerment. So governance, all the institutions, and I think the governments should be very vigilant that they set. We said that governance is nothing, these are the practices and procedures which are in operation to deliver. Any organization can deliver. So those systems and practices and procedures should be healthy. That is the responsibility of the institutions and the governments. There should also be the leadership. Leaders should be, I think, I can say that Simriti is the best leader, which has brought so many people all over the world together to talk their wisdom. And all those people who had been invited are really very well senior and knowledgeable persons. Across the UP also I have seen, I was not knowing them, but I have seen across the UP also very legend nursing personalities were there. So that is the leadership. So we must select a leader which has the capacity to do, which has the capacity to deliver the knowledge. The empowerment is very important. Unless and until you are empowered, empowerment is not the power. Empowerment is the power, is when you get knowledge of everything. Then when you are empowered, then you can discuss, you can empower others. That is very important. So the governance, empowerment, and leadership is very important for delivering the services or delivering anything. The most important, other important is the regulations. The regulations and accreditation. We have been talking that as per present educational policy 2020, all the institutions will become the self-governing institutions. Why? How can they become the self-governing institutions? Unless they are validated for that. They cannot just become self-governing institutions. Nursing institutions can also become self-governing institutions. But when they have graded accreditation, then only they can become. That is very important. And whenever you work, because I said that nursing research or clinical research, you cannot learn anything in the classroom. You cannot learn anything in the classroom. Even if you don't go to the classroom, but you go to the clinical along with the teacher. I would request all the teachers also, please, you cannot teach anything in the classroom to the students, and neither then this becomes only just a formality to talk about the clinical nursing. It's very important, if you don't teach anything in the classroom, but teach in the clinical area, make them to do in the clinical area, then I think nothing, you will have wonders in the nursing research. Therefore, the linking of research with teaching is very, very important. Linking of research with teaching is very, very important. Communication is very, very important. So all these things, and after you have done that, the feedback is very important. That means performance evaluation is very, very important for any institution, for anything to develop. That is very important. And then
the last thing which I will say is that if any institution or if any agency wants to start any institution, they have to focus on morality, they have to focus on justice, they have to focus on equality, they have to focus on equity, and then the professional ethics should be the part of the clinical activity. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now request Dr. D.S. Negi sir. Sir, please kindly come and address the gathering. Good evening, everybody. Bharat Mata ki jai. So, the dignitaries on the dais, Chief Guest, Colonel V.K. Singh, Dr. Chairman of this institution, Dr. R.S. Dubey Sahab, then Madam Kaul, Rajesh Gupta ji, Dr. Tiwari, and principal of this college, so Deepthi madam. So first of all, मैं आप सब लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जब इंस्टीट्यूशन जब मैं बन रहा था तब से मैं यहाँ पर आता हूँ, तो इसको मैंने जिसे कहते हैं कि एकदम शुरुआत स्क्रैच से बनते हुए और आज इस लेवल तक पहुँचते हुए देखा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर आर.एस. दुबे साहब हमारे साथ में, जैसे उन्होंने कहा कि चोली दामन का साथ, तो हमारे सर्जन थे, मैं एनेस्थेटिस्ट था, तो यहाँ के भी इसमें काफ़ी ऑपरेशंस मैंने इस हॉस्पिटल में कराए हैं। फिर उसके बाद में अभी वर्तमान में मैं मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे हूँ। तो बात ये हो रही थी कि क्या चीज़ कैसे ये करें, जैसे मिशन निरामिया लिया गया, मिशन निरामिया लिया गया, तो इसमें क्या है, इसमें ये कि एक हर कॉलेज का एक ग्रेडेशन होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज किस तरीके का है, तो उससे जो कॉलेज बेटर है तो एक आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे कि वो कॉलेज दूसरे उसके अगले कॉलेज के लोगों से आने के बराबर पे आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कॉलेज ठीक तरह से अपनी टीचिंग वगैरह नहीं कर रहा है तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वो ठीक नहीं है, तो ऐसे कॉलेज को बंद करने के लिए भी एक जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन निरामया का शुभारंभ किया, और उसके हिसाब से मैं जैसे भी देख रहा था आते समय, तो इस इंस्टीट्यूशन के समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के सभी कोर्सेज को ए ग्रेड प्राप्त है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के वक्ता आए होंगे, कई तरह के लोग आए होंगे, विभिन्न प्रकार से, जैसे बता रही थी कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और इवन कुछ विदेश के लोग भी थे, तो जिन्होंने अपने अपनी बातों को यहाँ पर शेयर किया। तो उसी के साथ साथ, क्योंकि हर जगह की चीज़ों को कुछ चीज़ें कहीं की अच्छी होती हैं, तो हम लोगों को उन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है। तो उस तरह से अगर हम फॉलो करेंगे और अपनी जो टीचिंग में या उस पर लाएंगे, तो वो इंस्टीट्यूशन जो है आगे की ओर बढ़ेगा। रही बात इसकी नर्सिंग की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि इसी लाइन में रहा, तो मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स का क्या होता है कि डॉक्टर्स आता है, सुबह राउंड लेता है और उसके बाद में वो चला जाता है। 24 घंटे पेशेंट किसके, नर्सिस के संपर्क में रहता है, तो जितना संपर्क नर्सिस से होता है उतना डॉक्टर से नहीं हो पाता है। तो आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि जो भी पेशेंट आए, आप
सबसे पहले किस तरह से आपका बिहेवियर किस तरीके से है, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ मैं अपने जहाँ हॉस्पिटल में डायरेक्टर था मैं वहाँ भी बताता था कि एक बात ये कि कोई पेशेंट का अटेंडेंट आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को ये है, तो आपने एक तरीका ये होता है कि भाई आपने कहा चलो भागो यहाँ से, हर समय दिमाग ख़राब कर किए रहते हो, और एक तरीका ये होता है बाद में आप जाते हो, और एक तरीका ये होता है कि चलिए भैया हम देख लेते हैं। तो एक जो आपका जो एक पर्सनल टच आप देते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही पर्सनल टच, और ये एक ऐसे प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आपको जॉब तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ में अगर आप उस पेशेंट को, आप लोगों ने अभी जो पुराने लोग हैं उनको पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए भी कि जो आपको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है, लेकिन आपके जो उसके पेशेंट के प्रति काम करने से जो जब ठीक होके जाता है, जो उसके रिश्तेदार जो आपको दुआएं देते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दुआएं जो हैं वो आपको और आपके परिवार को लगती हैं। तो ये चीज़ ये मान के चलना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो कभी भी किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा कि जब कोविड का पीरियड था, उस समय मैं डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश था, आपने वेरियस कंट्रीज़ का आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी बुरी हालत हुई, और जबकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कहीं बहुत अच्छा था, लेकिन जो हिंदुस्तान में यहाँ पर भारत में जो लोगों ने दिन रात कम रिसोर्सेज में भी लोगों ने इस तरह से काम किया कि उस समय आप सोचिए कि जब मरीज के अपने रिश्तेदार मरीज को पास नहीं जाना चाहते थे, जो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, उस विषम परिस्थिति में हमारे पूरे मेडिकल, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल्स हों, हर एक ने दिन रात काम किया, और उसमें कई हमारे ऐसे लोग जो है वो शहीद भी हुए, जिनके लिए कि तो इस तरह से अगर वो काम करने के बाद में जो प्रशंसा मिली, क्योंकि यूपी का जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए 24 करोड़ की करीब जनसंख्या है यहाँ पर, तो इस 24 करोड़ की जनसंख्या को देखना और कितने पेशेंट्स रहे होंगे, साथ ही साथ जो आपने ट्रीटमेंट देना था, उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन, चाहे फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, कोई भी डोज हो, दिन रात ऐसा मिरेकल किया कि जो विदेश के लोग भी ये सोचने लगे कि वैक्सीन हम लोगों ने यहाँ से डेवलप की, विदेश के लोग भी सोचने लगे कि इंडिया जैसी कंट्री ने ये सब चीज़ें कैसे किया। लेकिन वही जब एक टीम वर्क होता है, अगर कोई टीम वर्क होता है, हॉस्पिटल में भी आप देखिए, चाहे कहीं पे भी आप काम करें, ख़ास तौर से जो स्पेशलाइज्ड जो ब्रांचेस हैं, चाहे आप वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हों या आईसीयू के अंदर हों, तो आप देखें कि एक टीम वर्क होता है। डॉक्टर से लेकर हर आदमी का उसमें योगदान रहता है। डॉक्टर से लेकर एक सफाई कर्मचारी, हर आदमी वो जानता है कि जो आईसीयू में स्वीपर काम करता है, ही नोज़ कि इन्फेक्शन कंट्रोल में किस तरह से हमको काम करना है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, और हर चीज़ को। और आजकल आप देखिए हर कॉलेज में और हर हॉस्पिटल्स में एक्रेडिटेशन, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल था, तो वहाँ पहले NABH एक्रेडिटेशन सर के टाइम में हुआ, फिर उसके बाद में जब, क्योंकि जो हम लोग का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एनक्वास होता है, तो एनक्वास वो हुआ, तो हमारे हर आदमी को वो पता था कि किस तरह से जो है हैंड वॉशिंग क्या होती है, अगर हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है तो किस तरीके से देना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हर एम्प्लॉई को पता थी, और उससे फ़ायदा भी होता है कि आप रास्ते में जा रहे हो या आपके घर पे भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैजुअलिटी होगी, तो आप उसको किस तरह से टैकल करोगे। एक जो जब तक आप पेशेंट को हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते हो, तो अगर इफ़ यू नो द बेसिक लाइफ सपोर्ट किस तरह से दिया जाता है, तो एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते कि आप हर आदमी को आप बचा सकते हो, लेकिन अगर आप
मान लीजिए 50 आदमी में एक आदमी या 2 आदमी को भी बचा लेते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अब रही बात इसकी कि जो यहाँ पर आप देखिए कि मेडिकल कॉलेजेस यूपी में ये प्लान किया है कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो लगभग 65 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं और बाकी भी प्रोग्रेस में हैं। तो उससे आप ये सोचिए कि कितना जो नर्सेज की डिमांड कितनी ज़्यादा होगी, तो नर्सेज की डिमांड कितनी ज़्यादा होगी, उसी तरह से जो पैरामेडिकल्स की, अब नर्सेज में जैसे एमएससी नर्सेज हैं उनके अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, दे नो फार बेटर देन नॉर्मल स्किल्स के बारे में कि एक नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं जो अपने चीज़ों के उस सब्जेक्ट के बारे में उनको पूरी तरह से पता होता है। और आज की तारीख में हमारे जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में CHOs का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसमें जो BSc नर्सिंग के लोग हैं वो एम्प्लॉय किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जब हम लोगों ने ये प्लान किया था कि जब गवर्नमेंट इस पे भी प्लान कर रही है कि जो हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं कि जैसे कि आपका क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियंस और ट्रॉमा टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, इन लोगों को भी एम्प्लॉय करने की वो प्लान कर रहे हैं कि ताकि ये सब लोग भी ICU में या OT के अंदर जो है वो काम करें। इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे नर्सिंग का कर रहे हो, चाहे पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स में क्योंकि आप वही लाइन आपको आगे चल के करनी है, तो उस चीज़ में हर चीज़ को जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश करिए, उनको पता करिए। तो इस तरह से जब आप कहीं पर आप जाएंगे, जैसे आज की तारीख में जो क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है कि ICU के अंदर एकदम पेशेंट के मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग होती है, तो अगर क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है या ऑपरेशन थिएटर में OT टेक्नीशियन है वो भी मॉनिटरिंग को देखता है, तो अगर आप हर चीज़ को स्किल को अपने उसको करते हैं, क्योंकि जो क्रिटिकल केयर जो स्पेशलिस्ट है वो तो आता है, अपना राउंड लिया, उसके बाद में वो चला गया, बाकी जो स्टाफ नर्सेज हैं और जो टेक्नीशियंस हैं वही उस चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करते रहते हैं। और अगर कोई भी चीज़ जो उसमें अल्टरेशन होता है या कोई भी चीज़ जो उनको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, तो उसको स्पेशलिस्ट कंसर्न को अवगत कराते हैं ताकि वो उसमें कोई अगर मॉडिफिकेशंस है तो उस मॉडिफिकेशन के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट वो प्रदान करें। तो ये सारी चीज़ें वो है। और एक बार मैं फिर आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि वो लोग अच्छी जगह पर अपना जॉब करें और इस इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो रोशन करें। और धन्यवाद। Thank you, sir. So now I request our Honorable Chief Guest, Dr. Colonel Vinod Kumar Singh. So please kindly speak a few golden words to the gathering. Respected dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, good evening. It is my proud privilege to be here amongst you today. I have been an eye specialist, so I don't have much to say, but still a few lines will be here. A lot of knowledge has flown from the brilliant and the contemporary minds. They deliberated subjects
have been digested by the hungry minds. There is not much or hardly anything which has not been covered. Thanks to the organizers for giving me this small opportunity, and my special thanks to my dear friend Dr. R.S. Dubey, and our friendship is nearly in the 6th decade now. I will like to extend my hearty congratulations to the organizers and all the participants for making this evidence-based nursing care 2003 a roaming success. In medical field, a doctor is only as good as the resources and the team at his disposal. And the team in turn is only as good as the knowledge, skill, and the training it has received. In army, a soldier is put through a very, very hard training with the dictum that the more you sweat in peace, the less you bleed in war. With the same analogy, in nursing care, the harder you train, the better will be the results of the outcome of the patient care. Hands-on simulated based clinical practice is just the right stepping stone. Similarly, the continuous research in nursing is sure to enhance the learning of the nursing professionals. Such academic and practical sessions as organized here elevate the standards of the nursing care, thereby benefiting the patients and the society at large. Few tips I would like to share with the young minds of all ages. Firstly, keep the curiosity and student in you alive, as the learning has only begun. 2. Keep your upper faculties, eyes and ears open to new ideas and skills. 3. Keep a soft and empathetic attitude. Always stand in the patient's shoes and you will never go wrong. You are the extension of the doctor, his executive hand, and also an observer on his behalf. Always do justice to your patients, to your profession, such that justice should also seem to have been done. With these words, I wish you the very best in your future endeavors, and thank you for lending your ears. Thank you, sir. Now I request our volunteer kindly pass the mic to the audience. And we want one or two feedback regarding the conference, what you feel, what you experience, etc. So if anyone want to share with us. Anyone want to share any feelings, any experience, what you have? Any feedback from your side? Anyone? I'm asking not only student but also delegate teachers also. Please, if anyone, any feedback you want to share with us. Good evening
afternoon and all, those who gathered here, respected dignitaries on the days and off the days. I am coming from Himachal Pradesh. I am working as a principal at HIMCAPS College of Nursing. As a participants, I have started to register myself. Then afterwards, my friend was coming here as a resource person, Dr. Sunita Verma madam. Then I planned to do the research presentation, and before I was doing this registration, I would like to know the details that I was collecting from madam. It was organized in such a manner that everybody can understood the value of their trends and the current evidence practice. It need to be discussed in these 4 days. So I was amazed to see the prospectus first of all. Then I would like to, next step I was thinking that why can't I do the paper presentation? Next step only I was asking madam, then shall I do the paper presentation? Then that time it was closed. Then luckily I was having second brochure that it's been extended up to 1st of this September. Then finally I have decided and I have applied for it, and they have immediately responded within 24 hours, and it was like correctly they were saying the rules and regulations, how many slides it need to be prepared, how long the font size need to be prepared. So each and every guidelines, whatever it's been given through this online, it was more comfortable for me to proceed without enquiring anything about through this Samarpan College of Nursing. Through the online itself, they were giving good interaction with all the delegates, not only me, all the delegates. So I was feeling very happy to be the part of this Samarpan group, and I was really gained lot of knowledges from the day one. It starts from the simulation till now. I have gained. I have not only myself, even I'm interacting with other people. They were very enthusiastically, they are participating, they were raising the questions and they are clarifying. Already have discussed this, most of the state it's been covered. They were giving various knowledge. Even I was not aware of these midwifery practices which is there in and around these central portions of this India. We are in Tamil Nadu, we were not aware of this midwifery practices, independent practices and all. After coming here, forensic nursing is new for me. Even this midwifery practices is new for me, and so many things I have learned here. This is a very good platform for not only for the juniors, even for the senior faculty people also to get to know each other. And this, I would like to congratulate each and every person. Those are day and night they have put more effort towards success of this one. So I would like to congratulate. I am very happy to be the part of this. First of all, I would like to congratulate the madam and her enormous team effort. Day and night they are working. Even rain is coming, they are working. It is like positive effort and motivation. I felt myself to be like this in future. So thank you so much for your wonderful opportunity to give the feedback. Thank you so much, ma'am. Anyone else? If anyone want to share anything? Any students? No one is there. Any respected teacher, faculty, yeah? The last. Please pass the mic. Good afternoon, everyone. The all delegates and chief honors. Myself, Sukhti Malia from GSPO Kanpur College. I've already met Deepti ma'am when I was working in SR as a tutor, and I was knowing how affectionate and how much she's just inspired. She's an inspiration for me. So this whole conference was very, very knowledgeable for me, as I was aiming for PhD, but now I'm aiming, after listening to so many delegates and important persons, I'm just thinking to publish 2 of my research papers, because I have gained lots and lots of knowledge and ideas which I was not knowing as a graduate. But and I would also like to congratulate and praise the anchor ma'am, because I have also performed as an anchor in national conference when I was in BSc. It takes a lot of courage, ma'am, because audience does not pay attention to the anchors. So I was, from first day I was waiting, ki yeah, I will compliment you. It's a great thing. Thank you so much. I feel it, the pressure, ma'am. And second thing, I would like to tell something more, that it is very, very important for the youngsters when they are going for higher education to take it seriously. When they are going for PGs and PhDs, they think that ki, अरे job नहीं मिली government तो चलो MSc कर लेते. So that is lagging in the youngsters, because they are just coming and listening. They are not focusing. So that
this conference has done that work, and I'm hoping for future also, because I will attend it when Samarpan will conduct it. So thank you, Deepti ma'am, and thank you everyone sitting over here. It was very, very great. Thank you so much. Anyone want to share? Yes, please pass the mic here. Good evening, everyone. I'm a student of SINPS college, and I'm really grateful, and thank you, Dean ma'am, and our college for giving us the opportunity to be here and learn so many things in our field. And one more thing, that thanking Dean ma'am for giving us the opportunity to meet so many high personalities here. It's not really easy for everyone in our field to be here. So I would really like to appreciate my college, and especially my faculties and everyone who is working behind the platform, behind this stage. Thank you. Not only good, because you are here, so you should be very good. We are on a conference, so I would like to listen if you have any suggestion so that we can improve in our future conference. That is also very much needed. There are many people, if you have anything to say, you say so in next conference you will keep in mind and you will improve further. Please keep silence. हमारे सिस्टर्स को तो हमें कुछ बताएं. So, BSM Principal and Vice Principal of BSM College of Nursing. Ma'am. Hello. Yes, good evening, sir, and all the dignitaries on the dais and off the dais. Myself, Dr. Sunita Verma, and I came from Himachal Pradesh, and it is Sister Nivedita Government Nursing College. I am working there as an associate professor. So the most important thing which I wanted to tell, of course, means it was very well organized. By all means every words everyone has spoken out. But the most important thing is for the students, I wanted to tell, as I have told earlier also, whatever sessions been taken over here, so be very, very serious about those sessions. And many practical things, how you are going to implement in your day-to-day life, that is very important, because all the topics which were being discussed over here, it is very much useful for each and every student. And I must say, means you people are so fortunate, because many eminent personalities are here, and they have explored their views, shares, and explored many experiences also. So please be very, very careful, as sir has also told, and many all the eminent personalities, they have told about the empathy. The most important thing, don't study for that sake, like only you people have to earn the degree and to become a teacher. That is not sufficient. First you become a graduate, thereafter you work in the clinicals at least for 5 years. It is my humble submission to all the students, those who will become, those who will pass out from here, work in the clinicals, then only you will be able to clarify all the doubts of your students if you will work in the clinicals. So please, don't go for MSc even. Afterwards, you go for MSc when you will have at least 5 years of experience. Otherwise, so many errors are occurring when we are working in the clinicals, because students, they are after passing that BSc, because all are very much enthusiastic that we have to go for MSc and we have to become teacher. And why they have to become teacher? हमें night ना करनी पड़े as a staff nurse. इसके लिए. So please, you don't do that. Be passionate towards your profession and be professional and be empathic towards the patient. And never hesitate, again I will repeat my words, never hesitate to ask any question from anybody. But don't do anything wrong, because the life of patient is in our hand. Okay? And
Thank you so much, each and everyone. Thank you, ma'am. Thank you. I request the Vice Principal of BSM College of Nursing. Good evening to one and all present here on the diocese and off the dais. So it was wonderful to be here. We just registered the last moment. We were just in dilemma whether we need to attend it, whether it is in the online or offline. So when we came here for this conference, we feel how much we are privileged to be part of this conference and the way it is being organized and the team, the full vigor that they have organized it. It is also a learning experience for each one of us that to organize such a wonderful conference and very elaborate way to be part of that. And one of the important things I want to express it, all these resource persons are from a nursing fraternity. It was so wonderful to know that so many eminent personalities are with us and their experience, their expertise to share here. And when we hear them, even though we are here with many years of experience, we feel how much we are humble enough that we don't know anything. There are so much to learn more. So dear students, you are so lucky. Now itself you are able to get so much privilege to get all these experiences. Utilize it, as ma'am was telling. The core of our nursing is empathy. All our certificates will not bring it, but the most important is empathy with which we deal with each individual persons, either in the hospitals or in the teaching setup or in the community setup. Wish you all the best. May God bless you all. So anyone more, so that we can start our new program waiting for us. Anyone want to say last? Okay. Hello. Good evening to one and all present here. I am the student of GNM first year, Pushpanjali College of Nursing, Agra. I am glad to present here and see this international conference for the first time. I am very glad to hear. It's my lucky time to attend this conference, this international conference. At the starting point, I am started at the GNM staff nurse so it's not my ending point, it's my starting point. So that the sir says the beginning, the greater will be end. I am not stopping to the GNM, and I'll teach and I'll see the honorable guest, and they spoke so many inspirational words. All topics were so inspired me, and I'm very glad. I have no word to say that it will be more inspirational to me, and I'm glad always. Thank you. Request the volunteer to pass the mic. Good evening everyone. This is Khushi Mishra from Nirmala Institute of Nursing and Paramedical Sciences, Hardoi. Ma'am, all the panelists, all the teachers, juniors, seniors, firstly I would like to thank all of you to give a chance to us to present here, and this is our first chance that we are attending any international or any conference. So thank you so much for Samarpan Institute that you give us a chance
Thank you. Now I request our principal ma'am, Dr. Deepti Shukla ma'am. Ma'am, please kindly come over. Certificate to the registered college and also individuals. We are going to attend very few. Sir, I request our chief guest, guest of honor both, and the directors please come in front to distribute the certificates. Ma'am, aye, please. So first I would like to call both the sisters from BCM, Sister Gray and Sister Prabha. One of them is a vice principal in BCM College of Nursing, Hyderabad, and second one is a HOD Ops. Thank you, sisters, for joining us. Next, College of Nursing, Ajamgarh, AICCEDS, get ready. Get ready for the certificate. Then the Rajendra College of Nursing, anyone is there, please in the queue. Then GSVM Kanpur. Then Nirmala. Then Pushpanjali. Please be alert, you are there in the school. Thank you so much. College of Nursing Ajamgarh, AICCEDS, please come forward. So sir is here. सारे certificate थे इसमें नहीं होगा. Rajendra College of Nursing. No one is there. GSVM Kanpur. GSVM Kanpur, anyone? Yes, please come. आप सभी आ जाइए. एक साथ पकड़ लीजिए. Nirmala Institute, आ जाओ बेटा. You all can come on the stage together. There are nearby 18 students from Nirmala College of Nursing. Beta ऐसे. इसमें है सभी. पुष्पांजलि का डायरेक्टर साहब को देना है. पुष्पांजलि टीम आ जाए. अच्छा, निर्मला से कौन आए सर? ये निर्मला के बच्चे सब लोग खड़े हो जाइए. निर्मला के स्टूडेंट्स हैं. आई रिक्वेस्ट ओनली निर्मला कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट हैं. वन पिक्चर विल बी देयर. बेटा इधर आ जाओ. सभी का पुष्पांजलि थोड़े निकाल so that we will proceed to our cultural program. चलो कल्चरल बात.
Moving on, our next performances take us into the world of solo dances, where passion and talent shines brightly. But before the performance, we have one special performance by Dr. Negi sir on the audience's demand. आगे ना आइएगा, सुनिए प्रोग्राम जो चल रहा है, आगे ना आइएगा। क्योंकि इस समय तो ज़्यादातर सब एकेडमिक्स का ही और उससे रिलेटेड था, तो एक गाना मैं पेश करता हूँ कि ये पुराना गाना है, लेकिन मेरे ख्याल से म्यूज़िक वगैरह आप लोग को पसंद आएगा और बोल भी पसंद आ जाएंगे। तेरी निगाहों पे मर गए हम, क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों में जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। सलाम हूँ मैं, गल्ला पे घर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। साकी की जिस पे नजर न हुई, ऐसा ही प्यासा एक जाम हूँ मैं। बेवफा तेरी निगाहों पे अकीयताओं पे मर गए। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी
खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब बेवफा, एक निगाह देख ले, तेरी निगाह पे मर गए, बाकी अदाओं पे मर गए हम। क्या करें, क्या करें, क्या करें, तेरी निगाहों पे मर गए। थैंक यू। Thank you so much, sir. Your one song is re-energize again, everyone. So please a big round of applause to sir. Thank you. Okay, so for our first solo dance performance, it's BSc third year student on the stage. खुशबू से जुड़ा 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 है
This performance is a reminder that even in a vast global conference, each one of us played a unique role contributing our individual strengths. Moving on to the next performance, here can I have BSc 4th year student for her solo performance. 4th semester, sorry.
बीच में व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी हमारे बीच प्रोफेसर नम्रता पुनीत अवस्थी अभी पधारी हैं। आप राम मनोरैया मेडिकल साइंसेज में मतलब के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और हमारे समर्पण ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर आर एस दुबे की सुपुत्री हैं। और अभी बहुत देर मुझे इनसे एक शिकायत जरूर है कि इनको और पहले आना चाहिए था। ये बहुत देर से आई हैं, इसलिए मेरी शिकायत है, लेकिन मैं नम्रता से चाहूँगा कि एक बार यहाँ पर आए हम लोगों के सामने। और देर से आई हैं उसके लिए कुछ भी नहीं कहना, लेकिन 2 शब्द यहाँ जरूर कहें। नम्रता अवस्थी। बुलाया मैंने उसी लिए। चूँकि हम सब एक घर के हैं तो मैं तो बचपन से जानता हूँ, बहुत अच्छी गायिका भी हैं, अच्छी डांसर भी हैं, तो डांस का समय, लेकिन ये कम से कम 2 लाइन गाना जरूर गाएंगी। जो भी कहना 2 शब्द कहें, उसके बाद 2 लाइनें कम से कम यहाँ गाकर तब नीचे जाएं। नम्रता। थैंक यू वेरी मच। एंड मतलब बहुत इनफॉर्मली बात करेंगे यहाँ पे। फॉर्मेलिटी आप लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सीख लिया। सो आई अंडरस्टैंड इट इज़ कमिंग टू एन एंड दिस ग्रैंड इवेंट। तो मैं तो यहाँ अपने पापा से मिलने आई थी, एज प्रोफेसर नहीं आई थी। संडे है, अपनी मम्मी पापा को मिलने आती हूँ, तो मैं मम्मी से मिलने आई थी। पापा को फ़ोन किया तो बोले मैं तो इवेंट में हूँ। मैं कहा अच्छा, उनको प्रणाम करते हुए चली जाती हूँ। तो मेरा ड्रेस कोड भी आपको फॉर्मल नहीं दिखेगा। अब यहाँ आई तो पकड़ लिए गए कि स्टेज पे आ जाइए, तो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट स्टिल मतलब आई एम इन अ मेडिकल प्रोफेशन, प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, क्लिनिकल काम बहुत करते हैं, रिसर्च करते हैं, एकेडमिक्स में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। तो मैं देख रही हूँ अपने सामने किस तरह से समर्पण प्रोग्रेस करता चला जा रहा है, और ये बहुत ही सम्मान की बात है, बहुत गर्व की बात है, जहाँ से ये शुरू हुआ था और जहाँ तक ये पहुँच गया है। एंड इट इज़ ऑल टीम वर्क, इट इज़ ऑल टीम वर्क। और ये इस तरह का सक्सेस अचीवमेंट किसी एक बंदे के से नहीं होता। डॉक्टर आर एस दुबे, माई फादर, ही इज़ द पिलर, बट देयर आर देन अदर पिलर्स एज वेल। डॉक्टर वीपी तिवारी, दीप्ति शुक्ला मैम, एंड उनकी पूरी टीम, उनकी भी पूरी टीम। So it is always a teamwork, and it is wonderful to see this tree which has become such a huge thing. And I congratulate all of you and thank all of you for being here, for coming here and attending this event. Although बारिश ने थोड़ा मज़ा किरकिरा ज़रूर किया होगा, but चलता है। And जिस तरह से प्रोग्राम अभी यहाँ चल रहा था, that is amazing. वो बच्ची ने बहुत अच्छा डांस किया, और आई एम श्योर आगे पीछे के सारे इवेंट्स भी बहुत अच्छे रहे होंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम मी। और अब जैसे वो मेरे पापा हैं, वो मेरे जीजा जी हैं तो डॉक्टर वीपी तिवारी मेरे जीजा जी हैं, तो फैमिली के लोग ज़रूर हैं। तो अब इसीलिए उन्होंने पकड़ लिया कि गाना गाएंगे, ये गाना गाएगा तो कोई वो बनता नहीं है। बट चलिए मैं 2 लाइन गाती हूँ, बिल्कुल ही 2 लाइन गाऊंगी क्योंकि उसके आगे का याद नहीं आ रहा। और लेकिन ये बहुत पुरानी मूवी है, और देखें गेस कौन कर पाता है कि कौन सी मूवी है और किसने गाया है ये गाना। नहीं, कोई ट्रैक नहीं, नो प्रोफेशनल सिंगिंग। पुराने लोग पहचानेंगे। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो। Any guesses?
इतना पुराना गाना, ये हेमंत कुमार ने गाया था ये सॉन्ग। कोरा मूवी है, आई थिंक 1964 की मूवी है। तो चलिए, गाना भी हो गया, क्विज भी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ना यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Okay, so following these solo performances, we have vibrant group dance performances in the row, for which I would like to call JNM first year group girls. जाओ जी, हमारा गीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, हमारे शकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, हर चले मुझे बंगा दी मैं कह लगे, मर टुकड़े में जागी तो कहीं है चंदा में थारी चांदनी पड़ता मन में भाभी खुशी रे झुम 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 ओ मर टुकड़े में जागी तो कहीं है चंदा में थारी चांदनी पड़ता मन में भाभी खुशी रे झुम 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 Just as this dance unites performers in graceful harmony, our conference has united us in a common pursuit of knowledge and collaboration. Moving on, we have a performer from Puspanjali College of Nursing. It's again a solo dance performance.
And now for our grand finale, a spectacular group dance that celebrates the friendships and bonds we have formed during this conference. On the stage, can I have BSc third year students for the performance?
sharing of culture and talent. Thank you all. So I think after 3 days hectic scientific sessions, the finishing of the cultural event. So we have finished our sessions. We have ended the second international conference. So to announce it officially, I would like to invite Director of Pushpanjali College of Nursing, CMA, Mr. Rajesh Gupta, to deliver the vote of thanks. हेलो एवरीवन। वोट ऑफ थैंक्स एक इस तरह का काम है कि लड़की की शादी के बाद जो विदाई है तो लड़की का पिता दरवाजे पे हाथ जोड़कर खड़ा है। बहुत समय से इंतजार करना पड़ता है कि ये वक्ता हमारा समय खा रहा है, वो वक्ता हमारा समय खा रहा है, हमें कब मौका मिलेगा बोलने का, हमें कब धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका मिलेगा। खैर एनीवे, सब कुछ होने के बाद मिल ही गया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट को कंसीव करने के लिए अप्रूवल दी। क्योंकि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो कुछ थोड़ी बहुत ओबीजी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मिलाते चलना चाहिए। तो अब जब प्रोजेक्ट कंसीव हो गया तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रोल आया दूसरे डॉक्टर साहब का, तिवारी साहब का और प्रिंसिपल महोदया का। तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को, उस बेबी को बहुत अच्छे से किया। अब इस अच्छे से करने के लिए कि देखिए जैसे क्या होता है कि हम दूध में से मलाई निकालते हैं, मलाई से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी निकालते हैं, है ना। तो वो घी क्या था, जितने भी रिसोर्स पर्सन थे वो देसी घी थे। और ये जो बच्चों के ऊपर चमक देख रहे हैं ना आप कि दे आर नॉट टायर्ड, वो इसीलिए है क्योंकि इनको जो मटेरियल मिला वो बहुत अच्छा था और जो बाकी का एंटरटेनमेंट था वो भी बहुत अच्छा मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आराम से एसी में बैठे हुए हैं। तो आप लोग भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे पहला दिन जो था उसका सिमुलेशन का, स्किल ट्रेनिंग का, वो भी बहुत अच्छा था। लोगों को अभी चूँकि चीज़ें तो पुरानी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया है, पर जब कोई चीज़ सामने आने लगती है तो हमें लगता है कि ये नया है और सीखने का मौका मिलता है। अभी जाइए मत, क्योंकि इसके बाद भी एक परफॉर्मेंस है। जो जाएगा वो मिस करेगा। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो वो दिन बहुत बढ़िया था। दूसरा दिन जो हमारे सचिव साहब आए थे, मुख्य सचिव साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका चयन भी बहुत अच्छे से किया गया कि ऐसी ही पर्सनालिटी को ऐसी कॉन्फ्रेंस में लाना चाहिए। आपने सुना होगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हम जंगल में नाच रहे हैं तो हमें नाचते हुए कोई ऐसी पर्सनालिटी देखे कि वो हमारा गुणगान करे, तो इसलिए उनको बुलाया गया। तो वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी आप इस प्रोग्राम की सराहना करने में। उसके बाद जो 3 दिन हमारी कॉन्फ्रेंस चली, उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी मंथन हुए समुद्र मंथन की तरह था और बहुत अच्छा समुद्र मंथन था। कभी मेंढक के रूप में, जो समुद्र मंथन किस पे हुआ था, मेंढक की पीठ पे हुआ था, कछुए की पीठ पे हुआ था। तो कभी कछुआ तिवारी साहब थे, कभी कछुआ प्रिंसिपल मैडम थी, कभी कछुआ मैं था। और बड़ा अच्छा समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से जितने भी रत्न मिले, लेकिन बच्चों देखो बहुत काम की बात है और अभी पिक्चर बाकी है। जितने भी समुद्र मंथन से रत्न मिले सब आपको बांट दिए। अभी ने ले जाओ, जो थोड़ा बहुत विष बचा है वो मेरे और तिवारी जी के हवाले है। खूब डंडा मारना दोनों को, ठीक है। जो भी कमियां हैं हम उसको ओ करेंगे
हमारी जिम्मेदारी है कि आगे वाले समय में वो कमियां ना हो। अच्छे से मजा किया, 3 दिन सब कुछ किया, वैलिडिक्टरी सेशन भी आया। वैलिडिक्टरी सेशन में देखिए कितनी अच्छी पर्सनालिटी थी, पूरी आर्मी थी, एक कर्नल थे, एक मेजर थे, और वन से कर्नल इज ऑलवेज ए कर्नल। और कर्नल के लिए क्या है, वो डॉक्टर साहब की मूंछें नहीं थी, पर कर्नल का तो सब कुछ मूंछों पे ही है। तो और मंच पे कर्नल और मेजर थे, और सामने कौन था? सामने हेल्थ सोल्जर थे। आप सब लोग हेल्थ सोल्जर हो, आप लोग किसी उससे सेना से कम नहीं हो, है ना? आप डेंगू से बचाते हो, आप मलेरिया से बचाते हो, आप हर चीज से बचाते हो। तो आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे बड़ा इस बात के लिए आप लोगों को धन्यवाद है कि ये जो दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक बच्ची ने अभी वो गाना गाया था जब वैलिडिटी सेशन हो रहा था कि हम अगले साल फिर आएंगे, है ना, समथिंग गणेश जी का कुछ वो था। तो वो उनका जो इशारा था वो ये था कि चिंता मत करो, तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपको आना है। और मैं समर्पण इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साहब से और बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि तीसरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने के लिए आप हमें जिम्मेदारी दें, वृंदावन में करेंगे। तो कुल मिला के सब कुछ अच्छा है, सबके लिए धन्यवाद है, क्योंकि धन्यवाद के साथ साथ कुछ कुछ रेवड़ी बटती रहनी चाहिए, है ना, तो मुंह मीठा रहेगा। और एक कॉन्फ्रेंस ऐसी की जाएगी पुष्पांजलि कॉलेज के द्वारा, और जो उत्तर प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल कॉलेज एसोसिएशन है, उनके तत्वाधान में वो स्पिरिचुअलिटी के साथ की जाएगी। आप सबने एक नाम सुना होगा, माउंट आबू में ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी इसका, तो वहाँ पे आपको 4 दिन की वर्कशॉप मिलेगी, कॉन्फ्रेंस मिलेगी, जिसमें दीप्ति मैम इसी तरह के लर्नेड लोगों को बुलाएंगी। वहाँ भी समुद्र मंथन होगा। साथ में आप सबने शिवानी दीदी का नाम सुना होगा, बीके शिवानी दीदी, वो और उन जैसे बहुत सारे अच्छे स्पिरिचुअल लोगों से भी आपको हर रोज शाम को एक लेक्चर सुनने को मिलेगा, जिससे कि आप अपने अंदर मोरलिटी, एथिक्स और अपने कार्य प्रणाली को, अपने सोचने के नजरिए को बदल सकें। तो बहुत सारे यूपी में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। एक बहुत पुराना गाना है, आप लोगों ने कहीं गूगल पे ढूंढ सकते हो, वो उसका थोड़ा सा मीनिंग ये है कि अब बदल चुका, अब मेरे गांव के लोग बदल चुके हैं। तो इसी तरह से नर्सिंग भी अब बदल चुका है। नर्सिंग में बहुत स्कोप है। नर्सिंग में जितने भी कॉलेज हैं यूपी में, सब बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं आने वाले समय में। जो इस तरह से आज जॉइंट उस एफर्ट्स में प्रोग्राम हुए, इस तरह से सारे कॉलेज वाले मिलके जॉइंट प्रोग्राम करेंगे, जिससे कि बच्चों को, फैकल्टी को अवसर मिले और वो अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें। और मैं तहे दिल से पुष्पांजलि की ओर से समर्पण का, पूरे समर्पण भाव से पुष्पांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी अपने साथ जोड़ने की। देखिए, कोई भी अपनी सफलता में किसी दूसरे को सहभागी नहीं बनाना चाहता, पर ये इनकी दरियादिली है कि इन्होंने अपनी सफलता में हमको भी नाव में बिठा लिया। तो अब ये इस धन्यवाद ज्ञापन को यहीं समाप्त करते हुए एक छोटा सा, अभी जाना नहीं भाई, पिक्चर बाकी है। एक निवेदन ये है, एक गाना है, क्या गाना था भाई? आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। शाहरुख खान का एक गाना है, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। ये किसी भी प्रोग्राम के, सफल प्रोग्राम के एंड में होना जरूरी है, क्योंकि आप सब सितारे हैं और ये आसमान है। तो इसका रूल क्या है? पहले तो एक दीपिका पादुकोण चाहिए। कौन है? चले आओ।
सॉन्ग सुनिए, जब ये सॉन्ग शुरू होगा, लेकिन बच्चों, जब ये सॉन्ग शुरू होगा तो सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक, कि इधर से चढ़ेंगे और कैटवॉक करते हुए इधर से वापस अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। और जो शुरुआत होगी, सुनो, जो शुरुआत होगी वो डॉक्टर साहब से शुरुआत होगी। सबसे बड़े सितारे तो डॉक्टर साहब ही हैं। फिर ये जो लीजेंड्स बैठे हुए हैं इनसे होगी, बारी बारी से, अपने आप कहना नहीं पड़े, देयर विल नॉट बी एनी इनविटेशन, ठीक है। जो नहीं आया मंच पे, इसका मतलब है वो ये 4 दिन के प्रोग्राम से खुश नहीं है। और सारे बच्चों को विद्या रानी की कसम है, जरूर होगी। यस, चला दीजिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रोग्राम का समापन यहीं पर होता है। जिन जिन को और डांस करना है आगरा चलो।